सो फाइनली आज मैंने इतने दिनों बाद इतनी सारी शॉपिंग की, द बोरियस्ट जॉब इन द वर्ल्ड फॉर मी, एंड दैट टू बिकॉज आई एम माई होम टाउन। सो बेसिकली मुझसे क्या होता है कि हैदराबाद में आई कैनॉट अफोर्ड शॉपिंग एंड टॉप इट ऑल। मुझे पता नहीं है कि वहाँ पे कहाँ कौन सी चीज़ें सही रेट पे मिलती है in my city as I'm born and brought up, so I have the proper idea. And so today again after 1 year I went for shopping and I really purchased a lot of things for myself, mainly for myself. For Shivu kuch nahi hua. Currently Shivu is sleeping, so I'm able to do this vlog. Otherwise इस बच्चे की जगह होने से कि मुझे कुछ भी नहीं करने देता, no shopping, no blogging, nothing. Basically what I purchased few of the clutches. I just love जब दुकान में जाती हूँ ना तो ये accessories मुझे बहुत पसंद आते हैं, hair clips and all, these multiple colors, and this one I really like. You see a bit rose petals with leaves and all. So this is in accessories. I also purchased few of the earrings. Earrings मुझे सच में बहुत अच्छे लगे, ये चेरी वाले छोटे छोटे. And also I got this panda, the real panda, cute panda. And then this sweet little bracelet of my distressed color. I really like, actually bracelet मैंने बहुत ही टाइम के बाद परचेज किया खुद के लिए. I really like it. So let me give a try. Because बड़े बड़े झुमके पहन के I'm really tough, so मन नहीं करता उनको try कर. And then I really purchased the slippers also for me. Uh, Frankly and honestly speaking, I don't go much for the branded items because I believe आपको सस्ते में भी अच्छी चीजें मिल सकती है. So why to waste money on the name of brand? So I don't go for them basically. So these are the slippers. Nice color, green color. Actually, I purchased a kurti of this color, which I'll show. So I purchased the slipper also for myself. Do comment and let me know if you all like it or not. And this is a half yellow color trouser, obviously. And these are the home gown wear. घर में जो ladies पहनती है. So these are the nothing to show special in this also. What do we have over here? Yeah, so this is a kurti, as per which my sandal with some match. Ta-da. So this was a coincidence, but they match. So this is what I purchased because I am supposed to go somewhere in a religious place. So Kolkata में kurtis काफी मुझे affordable range पे मिल जाती हैं. This is what I purchased for myself. I'll wear and do a vlog on this also, like I do on all others. Okay, so just comment and let me know how is my kurti. And this is this. There are a lot of which I actually opt for because what I believe is the optimum utilization of anything. किसी भी चीज को waste नहीं रखते हो. And as I love colors, so this is a sleeveless kurti I purchased for a long time for myself. And इसको परचेज करने के बाद सबसे सैड थिंग क्या थी ना कि मैंने मार्केट में ऐसी ही कुर्ती बहुतों को पहने देखा. बिकॉज क्या होता है जब आप लोकल किसी शॉप से लेते हो ना तो वहीं के लोकल्स खरीद के पहन रहे होते हैं. एंड दिस इज अ थिंग आई डोंट नो हाउ अबाउट अदर लेडीज दे लाइक और नॉट, बट आई डोंट लाइक इट पर्सनली. लाइक जब मैं किसी को सेम क्लोथ पहना हुआ देखूँ ना मुझे बहुत ऑकवर्ड फीलिंग होती है. And that's what happened, but anyhow I have to carry this to other state, so not a matter. I'm okay with it. And yeah, the most important plazo, you know they are really important because मुझे जल्दी कोई पैंट फिट नहीं होता. As because I don't have कमर, I have कमरा. So these is the plazo, printed one, you know अब exact color match करके we can't buy, so we go for like black, maroon, white, printed, so that you can take on all the kurtis. Females already know about it. And this is a white color one which I do. सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जब आप लोकल मार्केट्स में जाते हो तो आपको अगर आइडिया होता है तो आप ले पाते हो उससे. एंड दिस इज द रीजन आई ऑलवेज कम एवरी ईयर टू कोलकाता टू गो फॉर सच शॉपिंग. यू नो सेटिस्फैक्शन मिलता है मेरे मन को. सो आई जस्ट ऑप्ट फॉर दिस. सो दिस वाज ऑल फॉर द डे. मेरे और भी ब्लॉग्स है जो मैं डाली हूँ बिकॉज आई वाज ट्रूली आज मैंने अपनी वो जिंदगी जी जो आई हैड बिफोर मैरिज व्हेन आई वाज इन कोलकाता रनिंग फॉर द लोकल्स एंड ऑल, व्हिच विल गेट टू सी माय अदर ब्लॉग एज वेल. विदाउट शिवू आई वाज ऑब्वियसली, विद शिवू पॉसिबल नहीं होता है. इट्स डिफिकल्ट टू मूव विद हिम. So that's all for the day. And if I do more shoppings or anything, I'll definitely put up the blogs and the shops, whatever I went for. The people who belong from Kolkata, they already know about it. Like Gadiya Market, you have New Market, you have Bada Bazaar. There are so many. और भी कई होंगे जो मुझे शायद नहीं पता है. Sham Bazaar है. So I just went for these few things, and I also had a haircut today. वो भी मैं कोलकाता में ही करवाती हूँ. I really don't go for any other place. I have an individual specified, and I only go to him because I love only his cutting. Otherwise, I don't prefer for much. So that's all for the day. Keep tuning, keep liking, subscribing for more such videos. You will be entertained. You never know what bumper thing is going to come up.